Hello, good evening. You're watching Hornbill TV's Primetime. C. Shika, Joint Secretary in the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on Monday said that India has an adequate buffer stock of food grains, well above the prescribed norms. She stated that the country currently has around 222 lakh metric tons of wheat and approximately 380 LMT of rice, taking the total food stock to about 602 LMT. Shika further noted that imports from key partners such as Indonesia, Malaysia, Russia, Ukraine, Argentina and Brazil have continued steadily, contributing to overall supply stability. She added that improved mustard production has also strengthened domestic availability, particularly in the edible oil segment. As you know that we have adequate buffer stock of both wheat and rice, almost 3 times the buffer stock norms which is there. For wheat we have around 222 LMT and for rice we are having around 380 LMT. So both put together around 602 LMT of food stocks are available with us. So this is quite enough to take care of PDS requirement, as well as any emergency requirement if any. As you all know, the NFSA Act, that is National Food Security Act, ensures continued access to food grains for vulnerable population. Other than food security, we also maintain, we also do market interventions to ensure that prices of food grains in market is stable. That is done through OMSS, Open Market Sale Scheme. So in this, FCI releases surplus wheat and rice in open market to augment supply, stabilize prices and contain inflation. As you know, in both the commodities right now, there is absolutely no hike in prices for over last 1 year. Adequate stocks are available with FCI for such interventions. And in this scheme, we are also giving subsidized rice under state scheme. So other than NFSA, if states want to give additional rice to under their state schemes, that is also available. Now regarding procurement under RMS 2627, procurement of wheat under MSP operations has already started, primarily through the state agencies. The department is regularly reviewing preparedness in coordination with states. Adequate packaging material is also being ensured for the procurement operations. So proactive steps have been taken to ensure availability of packaging material. The department, in consultation with MOPNG and DCPC, is diversifying packaging sources and maintaining contingency measures to address any shortfall. Edible oil scenario. So domestic availability of edible oil remains comfortable. Despite global uncertainties, imports from key partners is continued steadily, and our key partners include Indonesia, Malaysia, Russia, Ukraine, Argentina and Brazil. Improved mustard production has strengthened domestic supply. Overall supply remains stable. The government will continue to monitor this closely and will intervene if required. Regarding the sugar sector, adequate sugar buffer stock is available. Sugar production in 25-26 is expected to remain sufficient. 15.80 LMT of sugar has been permitted for export, with 3.73 LMT exported so far. Exports are primarily to Sri Lanka, West Asia and East Africa. Retail prices have also remained stable with very low inflation of around 3% over past 3 years. Thank you. Thank you, Shika ji. Now over to Sujata ji, Petroleum Ministry. Now, the United States Special Forces have rescued the second F-15 crew member alive, who went missing after Iran drowned the jet amid the West Asia conflict. The incident occurred in the isolated highlands of the Kogilue and Boyer Ahmad provinces, as well as the Bakhtiari region, where local groups targeted 2 Black Hawk helicopters on Saturday, as detailed by Iran's Fars news agency. A footage on Friday allegedly depicting nomadic Bakhtiari tribesmen armed with rifles patrolling the mountainous terrains of Iran's Khuzestan province in search of the American personnel. To further incentivize their search, Iranian authorities had reportedly announced substantial financial bounties for the successful capture of the missing individual. On Friday, it emerged that an F-15E, an advanced US fighter jet, had been shot down over Iran. One pilot rescued, however, the second member went missing. For 2 days, there was no word about the search. Then overnight Sunday,
Officials said the second crewman had been recovered. The airman, a colonel, had been trapped in the treacherous mountains of Iran, with Iranian military closing in. President Donald Trump on Sunday hailed the mission as one of the most daring search and rescue operations in U.S. history, and writing in a social media post, "We got him." Two Black Hawk helicopters that were part of the operation that rescued the pilot also took Iranian fire as they attempted the rescue mission on Friday. There were injuries to some of the crew members, but they were able to return to safety, U.S. officials said. Moving on, a 20-year-old student from Basti district in Uttar Pradesh died after a basketball stand collapsed on him at the Tolani Maritime Training Institute in Lonavala, Pune district. The deceased, identified as Vishal Verma, was playing basketball with fellow students on the institute's court when the heavy iron stand suddenly uprooted and fell on his head, causing severe injuries. He collapsed on the spot and began bleeding profusely. Students and staff where doctors declared him dead due to excessive blood loss. Following the incident, students and the victim's family accused the institute of negligence, alleging poor maintenance and lack of safety checks on sports equipment. The accident triggered outrage on the campus. Police from the Ambi MIDC police station reached the spot and conducted a Panchnama. Officials said a probe is underway to determine whether the stand collapsed due to corrosion or faulty installation. Meanwhile, the victim's family has submitted a written complaint, but an FIR has not yet been registered. Police said a case will be filed after the post-mortem report is received. मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर का कैडेट हूँ। सर हुआ क्या था कि टाइम हो रहा होगा कुछ 8 बजे के आसपास। सर मैं सो के उठा था, नॉर्मल वॉशरूम जा रहा था, तो मैंने अदक सर को देखा कि वो दौड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि स्ट्रेचर लेके आओ, स्ट्रेचर लेके आओ। सर मेरे अभी भी देखिए पैर शेक कर रहे हैं, तो मैं तुरंत दौड़ा उनके साथ कि कुछ इमरजेंसी हुई होगी, कुछ इमरजेंसी हुई। सर मैं यहाँ तक जब आया तब मैंने देखा कि मतलब मैं जब दौड़ रहा था मैंने सोचा कि नॉर्मल से कुछ हुआ होगा, कर देंगे। सर मैं जब यहाँ पे आया, ये पोल नीचे से एकदम सीधा ऐसे गिरा हुआ, और सर उसके यहाँ पे उसके फोरहेड पे वो जो उसका नीचा पोर्शन है लोहे का, वो पूरा अंदर जा चुका है। सर इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि उनके ब्रेन के पार्ट्स निकल के बाहर आ रहे थे। सर हम लोगों ने देखा, सर ये देखिए अभी भी खून के निशान है। सर हम लोग यहाँ से उनको लेके जाएंगे। सर आप फोकस करना चाहिए, टूटा कहाँ से उठाने के, उनको उठाना चाहिए, मदद करनी चाहिए हमारी। सर वो ऐसे फोटो ले रहे हैं सर, अलग अलग एंगल से फोटो। वार्डन है हमारे, और सर वहाँ पे 3 वो हमारे वार्डन सर, वहाँ पे कुछ 5 या 6 होंगे सीनियर्स होंगे, उनमें से वासु सर हमारी मदद कर रहे थे और एक और सर थे, उनका मैं नाम नहीं जानता। तो सर पहले मैं अकेले कोशिश कर रहा था कि इसको लिफ्ट करूँ। सर वो मेरे को हाथ से इशारे कर रहे सर, जो डैमेज थे, कि मेरे को ले चलो, ऐसे ऐसे कर रहे थे, आँख से मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे कि ले चलो ले चलो। सर मैंने उसको अकेले उठाने की कोशिश की, सर मुझसे उठा नहीं। फिर सर एक सर ने मेरे से हाथ लगाया, तब लोगों ने उसको वहां से उठा के यहाँ पे रखा, और सर तब तक वो जब अंदर से सर पोल निकला ना सर, और ब्रेन के पार्ट सर बाहर आने लग गए। सर फिर मैंने सर हाथ पकड़े, सर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पैर उठाए। सर किसी फैकल्टी मेंबर ने, किसी गार्ड ने, सर किसी ने अपना एक हाथ भी नहीं दिया कि सर उठा के ले जाए। सर जब लोगों ने स्ट्रेचर पे उठाया, हमारी सिग्बे यहाँ से कुछ 200 या 250 मीटर दूर होगी। सर एम्बुलेंस का काम है कि यहाँ पे उसको आना चाहिए। सर एम्बुलेंस नहीं आई, हम लोग 200-250 मीटर, मेरे हाथ पैर कांप रहे, मैं उनको लेके जा रहा हूँ। सर मेरी वहाँ पे स्टेट नहीं था कि मैं उनको लेके जाऊँ। और सर मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था, विशाल वर्मा उनका नाम था, सेकंड एमई मुरारजी हाउस के थे। तो सर मेरे को देखा कि इनको मैं जानता हूँ, इनका ऐसा हाल है। सर वो मेरे को हाथ से ऐसे इशारे कर रहे हैं कि मेरे को ले चलो ले चलो। सर जब मैं वहां पे गया तब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि सिग्बे में एम्बुलेंस ही नहीं है, और सर वो सिग्बे से वो निकलते इतना बड़ा कॉटन का क्लॉथ लेके आते सर उनके सर में ऐसे डाल देते हैं। तो मैं ड्यूटी वार्डन था, मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक थी। आज करीबन 7:40 के आसपास मेरे पास 2 हॉस्टल 2 के कैडेट आए, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे टीबीसी में कोई अपना एक कैडेट गिरा है और उसके ऊपर पोल गिरा है।
मैं तुरंत शिकबे को कॉल किया और उसी 2 कैडेट आए थे, उनसे मैंने स्ट्रेचर लेके यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे आने के बाद उसके ऊपर जो पोल था उसको हटाया और उसको सेम टाइम स्ट्रेचर पे डाल के शिकबे में लेके गया। इन बिटवीन जाते समय हमारे पास एक प्राइवेट व्हीकल अवेलेबल हो गई, उस प्राइवेट व्हीकल में डाल के उसको हमने म्यांमार भेज दिया। ठीक। We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. Oho, nachubi. Itu bhal saman na hoy. Itu pra apni ke bimar kori dibo. Apni ki lage amaki kubi de. Pesticides aro insecticides nishna dawai to bishi lagi thakya jinis ase. Hoile bi thik pra narakhile to ekdom dangor dorkar hoi jay. Pesticides aro insecticides khan ke thik pra store na korile to contamination hobo, kisim accidents hobo pare aro jan bi jabo pare. Inika dawai khan ke ghor aro dukan nishnate rakhya samay itu khotha khan dhyan rakhibi. Itu dawai bottles khan ke kitya bi kha saman osorde na rakhibi aro khana pani sabji dawai khan logot dur rakhibi. Hodai gloves khan cholabi aro chua pichide hat to sabun pra sapa koribi. Fruit sabji khan nakha akote bhalbar dhulabi sukopra na dikhya chemicals khan thakibo pare. Hodai original containers tai laga osol dabate hi rakhibi itu pra dawai nam to chinibo aro golti na hobo. Hawa jabole paria almira de thik pra bond koribi aro bacha aro janwar logo dur rakhibi. Ami khan holop hoshiar na hoile to jan bi jabole sosta ase. Safe rakhibi, healthy thakibi. Sponsored by Food Safety Authority, Department of Health and Family Welfare, Government of Nagaland. Eat right, eat safe. Welcome back. 19 new Rajya Sabha members took oath on Monday in the presence of Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. The newly elected members comprise 5 from Maharashtra, 6 from Tamil Nadu, 5 from West Bengal and 3 from Odisha. NCP-SCP leader Sharad Pawar and Union Minister Ramdas Athwale were among the new members. Most members took oath in their respective regional languages. श्री शरद चंद्र पवार। मैं शरद चंद्र पवार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस वस्तु मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रामदास बंडू आठवले। मैं रामदास बंडू आठवले जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
A Central Reserve Police Force Jawan has sustained injuries in an IED blast during an anti-naxal operation in the forest of Saranda in Jharkhand, the police said. According to the police, the injured Jawan has been airlifted to Ranchi for better medical assessment and treatment after the blast. Further details regarding the incident are awaited. Meanwhile, in line with the intent of the government, the joint efforts of the security forces, local administration, local people and all concerned stakeholders are now taking the goal of a Naxal-free Bastar towards its former completion. The government had set a target of March 31, 2026 for Naxal-free India. The United States and Iran have received a plan to end hostilities which could come in effect on Monday and result in the opening of the Strait of Hormuz. As per the report by Reuters, the framework has been put together by Pakistan, exchanged with Iran and US overnight, the source said, noting of a two-tier approach with an immediate ceasefire followed by a comprehensive agreement. According to the report, the proposal would see a ceasefire to take effect immediately, reopening the Strait of Hormuz with 15 to 20 days to finalize a broader settlement. The deal, tentatively dubbed the Islamabad Accord, would include a regional framework for the strait with final in-person talks in Islamabad. Reuters noted, while there was no immediate response from the American and Iranian officials, Pakistan's Foreign Office spokesperson Tahir Andrabi declined comments. We'll take a short break, so stay tuned for more news. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। Gauri balpra kiniga dangor hoi jane bole monase gauri karne spunky kuigina dana introduce kriasi kuntu balpra saigina gauri ge nutrition digina dangor banable nimide ola lagasi itudo Messrs Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo Welcome back. At least 4 people were killed and 8 others were seriously injured after an SUV car collided with an Eicher truck in Madhya Pradesh's Indore district late Sunday night. The accident occurred near the trenching ground Devaguradia under the jurisdiction of the Khudel police station in the district. Passengers in the car were returning to Indore from Sehor district after attending a wedding function. All of them were residents of Iqbal Colony, Sadar Bazar in Indore. Upon receiving the information about the incident, the police rushed to the spot and sent the injured to MY Hospital. Assistant Sub-Inspector of MY Hospital Police Outpost Ranveer Singh Parihar said that they will register a 0 FIR and then will transfer the details to Khudel Police Station for further
investigation of the matter. जानकारी लगी थी, कहाँ की घटना, कितनी की देर हुई है, क्या सामने आया? आज देर रात थाना खुलेल क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास एक आयसर से एक कॉलेज कार की टक्कर हुई थी, जिसमें कुल 11 लोग सवार थे और इसमें से अभी तक जो हमको खबर मिली, इसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। और ये जो कॉलेज में जो सवार थे वो सदर बाजार के मुल्क से रहने वाले हैं और आस्था से ये बारात लेकर लौट रहे थे और उसी दौरान जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास यहाँ पे आयसर से उनकी टक्कर हुई। सर, मृतकों के नाम है, टोटल कितने लोग सवार थे? कुल इसमें अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है 11 लोग उसमें सवार थे। इसमें 3 जिन लोगों की मृत्यु हुई है इसमें फरहान, इरफान और आरिस करके जो नाम जो है सामने आए हैं। सर, किस तरीके से घटना घटी थी? अभी जो जिस प्रकार से घटना का जो घटनास्थल को देखा गया है और जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जो आयसर गाड़ी थी वो आगे चल रही थी और उसके द्वारा जो है अचानक ब्रेक लगाया गया, जिससे पीछे से आने वाली जो कार थी वो जो है उसमें पीछे से उसको टक्कर लगी। सर, स्थिति भी गंभीर बनी हुई थी थोड़ा। अभी लगातार हम एमवाई में डॉक्टर्स के साथ संपर्क में और हमारा प्रयास और उनसे बातचीत लगातार जारी है कि जो भी घायल वहाँ पे गए उनको बेहतर से बेहतर जो है उनको उपचार जो है मिल सके। सर, काफी लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी हुई थी यहाँ पे। जब हालांकि पुलिस यहाँ पे टाइम से पहुँच गई थी और जो परिजन है चूंकि तो आक्रोशित थे और उनके द्वारा जो है यहाँ पे गाड़ियाँ रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको and that's all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.